Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that today we will start chapter number 1 of your Science 4 books, that is Characteristics and Life Processes of Organisms. And today I will give you a complete introduction of this chapter. So my dear students, in this chapter, you will learn about animals and plants are two distinctive and diverse groups of living things. Both express the attributes of living things in their specific ways owing to different body parts. In the following chapter, we will study various characteristics and the diversity found among both groups. So my dear students, because we are going to study about the characteristics of living things. So plants and animals both are living things. Both have the characteristics which they should have for to be a living thing. तो living thing होने के लिए जो जो characteristics ज़रूरी है plants और animals दोनों के पास वो मौजूद हैं. So उनके क्या क्या life processes हैं, क्या different characteristics मौजूद हैं उनके लिए, we will discuss in this chapter in detail. So my dear students, in lecture number 1, the students will be able to compare and contrast characteristics and distinguish major groups of living things. Those are plants and animals. So my dear students, जब हम lecture number 1 start करेंगे तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो living things के जो important characteristics हैं, जो उनको non living things से distinguish करते हैं, उनके बारे में जो है वो जान सकेंगे और compare और contrast कर सकेंगे जो major groups हैं उनके दरमियान में जो कि plants और animals हैं. The page that is included is this characteristics of plants and animals. Then we will move forward towards lecture number 2 and the students will be able to again compare and contrast the characteristics that distinguish the major groups of living things, plants and animals. So यहाँ हम one by one in detail जो है उनके different जो characteristics हैं जैसे कि movement, growth, respiration इनके बारे में discuss करेंगे. So in lecture number 3, the students will be again able to compare and contrast the characteristics that distinguish the groups of living things, plants and animals. And here we will again discuss about their feeding process, respiration, excretion, their different process. उनको हम थोड़ा सा detail में जो है वो discuss करेंगे. Then in lecture number 4, again the students will be able to compare and contrast the characteristics that distinguish major groups of living things, plants and animals. And here we will discuss about how they eat, they feed and their reproductive procedure. We will also discuss about how they sense and respond to their environment. In lecture number 5, the students will be able to again compare and contrast the characteristics that distinguish the major groups of living things, plants and animals. And in this lecture, we will study about excretion. यानी कि हम one by one जो different characteristics हैं, उनको in detail जो है हर lecture में discuss करेंगे. इसीलिए एक student एक ही जो SLO है वो repeat हो रहा है. In lecture number 6, the students will be able to again compare and contrast the characteristics that distinguish major groups of living things, plants and animals. And this time we will discuss about excretion. In lecture number 7, the students will be able to again compare and contrast characteristics that distinguish major groups of living things, plants and animals. आप देखें कि एक ही student learning outcome चल रहा है क्योंकि one by one जैसे जैसे lecture move forward करेगा तो हम हर लेक्चर के अंदर डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि इसी एसएलओ को एड्रेस करेगा. जैसे कि हम मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, फीडिंग प्रोसेस को, रिप्रोडक्शन को, एक्सक्रीशन को, रेस्पिरेशन को. तो वन बाय वन हर लेक्चर में इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर नंबर 8 the students will be able to classify animals in terms of vertebrates and invertebrates with examples and analyze the differences and similarities in vertebrates and invertebrates. So my dear students, अब हम animals के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि animals को categorize किया जाता है vertebrates और invertebrates में, क्या क्या characteristics होते हैं, कैसे bodies जो है वो उनकी different होती हैं और वो different categories में lie करते हैं. This will be discussed in lecture number 8. And in lecture number 9, the students will be able to classify animals in terms of vertebrates and invertebrates with examples and analyze the differences and similarities in vertebrates and invertebrates. So यहाँ पे हम इनके differences जो हैं vertebrates के और invertebrates के उनको हम discuss करेंगे. In lecture number 10, the students will be able to again classify the plants in terms of flowering and non-flowering with examples and analyze the differences and similarities in flowering and non-flowering plants. So my dear students, आप यहाँ पे देखें कि अब हम
जो मेजर ग्रुप्स हैं लिविंग थिंग्स के, उनको जो है हम डिस्कस करें. फर्दर एनिमल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम प्लांट्स को डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ सम आर फ्लावरिंग एंड सम आर नॉन फ्लावरिंग. So my dear students, in lecture number 11, the students will be able to classify plants in terms of flowering and non-flowering. Again, इन्हीं की characteristics को जो है वो lecture number 11 में भी plants की characteristics को discuss किया जाएगा. So my dear students, यहाँ पे हम similarities पढ़ेंगे flowering और non-flowering plants में. So my dear students, in lecture number 12, the students will be able to recognize and appreciate the diversity in life, both plants and animals, and identify ways to protect diversity. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही ग्रुप्स जो हैं वो बहुत डाइवर्स हैं. डिफरेंट तरह के एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं दोनों ग्रुप्स में मौजूद हैं और वो हर तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. तो हम इनकी डाइवर्सिटी के बारे में जो है वो लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर नंबर 13 द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अगेन रिकग्नाइज and appreciate the diversity in life, both plants and animals, and identify the ways to protect diversity. So my dear students, हम यहाँ पर ways to protect biodiversity, किस तरीके से हम biodiversity को protect कर सकते हैं, क्योंकि इसी की वजह से life जो है वो earth पे sustain करती है, क्योंकि ये diverse है. So my dear students, in lecture number 14, the students will be able to identify major parts, organs in animals like teeth, bones, lungs, heart, stomach, muscles, and brain. And they will also be able to relate the parts, organs of body of animals to their functions. For example, teeth break down food, bones support the body, lungs take in air, they circulate the blood, and stomach helps to digest food, muscles, and move the body. So my dear students, यहाँ हम one by one जो different organs हैं और वो किस organ को किस function के साथ connect किया जाता है, हम one by one lecture number 14 में discuss करेंगे. lecture number 15 में हम जो bones हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो bones हैं वो support का काम करती हैं, and how they support the body and help it in movement. And in lecture number 16, we will discuss about the heart, यानी कि blood flow के बारे में, कैसे heart जो है वो पूरी body में blood pump करता है. Same ऐसे लो follow होगा, क्योंकि इसी के अंदर हम organ को उसके function के साथ connect करेंगे. So my dear students, in lecture number 17, the students will be able to discuss this time about the muscles and how they help in digestion, and about the brain and its function. So my dear students, in lecture number 18, the students will be able to identify the parts of plant like leaves, stem, flowers, seeds and roots. जैसे हमने human body में या एक animal body के अंदर different body parts और उनके functions के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी तरह हम flower के different parts और उनके functions के बारे में lecture number 18 में discuss करेंगे. So my dear students, in lecture number 19, the students will be able to relate the structures of the plants to their functions, that is roots absorb water and nutrients and anchor the plants, leaves make food, the stem transport water and food, flower produce seeds and seeds produce new plants. So this time हम जो different parts हैं वो कैसे different functions को perform करते हैं एक plant के अंदर, हम उनको discuss करेंगे in lecture number 19. And in lecture number 20, this will be the review of the chapter. आपको जो है तमाम चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज करवाए जाएंगे, एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको असेसमेंट शीट प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपके जो है एवेल्युएट किया जा सके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल एंजॉय दिस चैप्टर. यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.